गुड आफ्टरनून सिद्दीकी सर। Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good Thank you. afternoon, sir. Professor Rameshwar ji, good afternoon. Participant, good पांडे सर afternoon. ज्वाइन Happy New Year. पांडे सर ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। AR सेठ सर नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार बहुत नमस्कार सर। ये अच्छा मौका है कि ये लोग इसी विश्वजीत सर को भी नमस्कार। विश्वजीत जी, विश्वजीत सुदीप जी बहुत हमारे प्यारे हैं। तुलका सिन्हा जी भी जुड़ी हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। अच्छा थैंक यू सर। नमस्कार। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। Good to see sir. आपको सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद सर यहाँ इस मीटिंग में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बात है, कौन बोल रहे हैं? विपुल जी? Yes sir. अरे नाइस। कहाँ हैं आजकल? DSC सर। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। कैमरा ऑन करिए विपुल जी। Yes sir. Yes. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Am I audible sir? हाँ यस यू आर ऑडिबल। वहाँ पहुँच गए, आराम से एडमिशन वगैरह ले लिया है? Yes sir. Everything is fit to fine sir. Okay, very nice. Yes, sir. Vipul said very rightly Thank you, that it is really feeling good that after University of Allahabad we are staying here. You joined Delhi University. Yes, From sir. And I am in JNU right now. From traditional to modern. हाँ? Yes, sir. वो हम लोग छोड़ के चले गए भाई विपुल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले गए। Sir, Deepak is also here a student sir. He finally went up in JNU sir, and I landed in DSC sir. Very nice, very nice. Sir. सर इलाहाबाद तो तुलना किया जाता है विदेशों से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कैसे कहते हैं इलाहाबाद क्या है? अरे वो जो है माने साउथ को उसके हमें इंग्लैंड कहते हैं। माने उतना अच्छी जो उसको रोशनी में सजाए हुए थे बिल्डिंग को हमने देखा। इलाहाबाद हम आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं। इलाहाबाद ही इलाहाबाद। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था किसी जमाने में, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। तो फोर्थ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। Yes, sir. विपुल आनंद को देख के अच्छा लग रहा है कि अभी कुछ महीनों तक पहले यहाँ थे, अब दिल्ली में हैं, और ये गूगल मीट की वजह से सब पॉसिबल हो जा रहा है कि लोग मीटिंग कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिद्दीकी सर जैसे कलरफुल आदमी। अरे भाई साहब है तो, लेकिन इतने नहीं है जितना SAIARD जो है छाया रहता है हिंदुस्तान में। आपका जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं करा पाती हैं, और आप जो है महीने में 2-3 प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे लगे रहते हैं। ये रामेश्वर जी भी देखते होंगे अक्सर कि विश्वजीत जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम चलता रहता है और कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। थैंक यू। एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा एक प्लेटफॉर्म। विश्वजीत सर को नमस्कार। विश्वजीत सर नमस्कार। मैं बिहार से डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद से। सुदीप जी बहुत आपके प्रिय हैं। नमस्कार सारे लोग। BW पांडे है सर, देखे अब तक। प्रोफेसर पांडे हमको लगता है ज्वाइन कर लिया उन्होंने। सर पांडे सर आर यू हियर? हाँ विश्वजीत सर नमस्कार। मैं सूर्यवंशी सर फ्रॉम औरंगाबाद। हेलो सिद्दीकी साहब नमस्कार। हेलो फाइन, अच्छे हैं सर। थैंक यू सर। अभी तो ये जो प्रोग्राम लेक्चर सीरीज शुरू होने जा रहा है, तो इसमें अभी सारे जियोग्राफर्स को हमें जोड़ना है। सारे जियोग्राफर्स बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा हमें करना है। मैंने हर एक महीने में अभी मुलाकात एलुमनी ऐसा हो ही जाएगा। चलो आज हमें सिद्दीकी सर से मिलना हुआ, अच्छा हुआ। हाँ बहुत दिनों बाद
मुलाकात हाँ हो ना पा सर, रही हाँ ना सूर्यवंशी सर, जी? नाम सुनते रहते। बहुत दिन से। पांडे और सर क्या ये ज्वाइन किए? सर का एक्चुअली एक डीन मीटिंग भी है वाइस चांसलर्स के साथ, तो वो बताए थे। तो अगर हम आपके आगे हो तो हम शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू पांडे कर सर दीजिए। अगर छोड़ेंगे तो पांडे सर को हम ले लेंगे इसमें। शुरू कर देंगे तो हमें भी आसानी हो जाएगी। यस सर, यस। शुरू कर तो दीजिए ना आगे। मैं प्रोग्राम में जुड़ा रहूंगा। इन द मीन टाइम कोई दूसरा काम है उसको भी निपटा देते हैं, 10 मिनट का काम। अच्छा, तो बुलू, आई थिंक बुलू मैडम और ज्योति, आर यू हियर? Yes, sir. Okay, so we should start and let the Pandey sir join and we will call him. Okay, sir. Good afternoon, everyone. This is Jyoti Pasi, the coordinator of this webinar. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all in our first lecture of our monthly series on the topic of changing definition of geography from traditional to modern approach, organized by SAIARD. Today we have Professor Bindi Pandey, the Professor of Geography, University of Delhi. Secondly, we have Professor A.R. Siddiqui, the Head of Geography, University of Allahabad. And lastly, we have Dr. Madanan Suryavanshi, the Assistant Professor and Department of Geography of Mama University. I welcome our chief guest respectfully for our today's lecture. So, to begin our webinar, first I would like to invite Biswajit Roy Chaudhary, the Chairman of SAIARD, for our inaugural speech. Over to you, sir. Thank you, Jyoti, and thank you, my team, and also my sincere thanks to all honorable guest speakers for eminent speakers for today's lecture series, which we are going to start from today in continuation, and it will be in continuation mode in every month. That is the changing definition of geography from traditional to modern approach. So on behalf of SAIARD, I sincerely give my greetings to all of you, sincerely share my greetings to all of you and wishing a very happy new year ahead. So the theme which we have coined for this particular webinar's monthly lecture series, you may say, that the changing definition of geography. You may know that as a geographer, we feel that lots of changes have happened day to day, and after this COVID-19 situation, whatever we have seen, that we have to shift our academic motivations, academic activities from the traditional classroom sector to the modern online sectors, which we were not used to. But now we have to accustom with this sector. So along with that, there are several changes has already happened in case of education sector. You may know that the national education policy will coming soon. National geospatial policy has already been launched. And on that, we have the GIS remote sensing technology. There are several activities, several approaches has come. And also this COVID-19 situation has also changed a lot, not only in philosophical sector, but also in case of practical sectors too. So with this respect, I think this concept of geographical foundations, which we have continuously focusing since the beginning of the formation of that subject, it has continuously changed with the traditional, from the breaking the traditions to the modern approach, and all that field are quaint, and all that field had gained some momentum with the thoughts of some eminent geographers or the social scientists. Because right now we are entering into the field of integrated learning. And this integrated learning will help us not only in case of our energize our brain, also in case of energize our knowledge, and also incorporation of knowledge throughout these different parts of the sections. It definitely help in the different and helps to develop the subject into the different branches. So now, whenever we have break the chain, we are going to the already we are entering into the field of breaking chain system, where right now in online mode we can connect throughout the world in a single platform. And so I hope that these conversations, these roundtable discussions or panel discussions, or whatever you may say, that it will definitely help to develop several output or develop several knowledge inputs through which we can think that what should be in our future geographers activity, what should be the focus of our future geographers, and what should be the philosophical perspective or changing philosophical perspective that we have to think according to the changing phase of our world.
So in that respect, these lecture series we thought we should start. And as I'm already told that I'm a geographer in, though I'm the chairman, a founder chairman of this institution, but still I am the faculty. I'm a teacher in by heart. And so in that respect, I feel that there is some responsibility on for my subject too, and for my students and for my upcoming generations, as that we can note some points which can be incorporated into our future geography syllabus. And in that respect, today, the eminent speakers, the pioneers of geographers, the Professor with Bindi Pandey sir, Professor A.R. Siddiqui sir, Professor Suryavanshi sir, and they will start this inaugural session, and we are extremely happy and we are extremely blessed that they have given their consent to be a part of this lecture series, and you can say the inaugural lecture series of these geographical fraternities. And also in future, we are planning to connect the geographers of all the Indian states initially, and after that we will go for in bigger way. And you know that we have a very good platform in Facebook also and WhatsApp also, that is the Geographers Meet, which we have created since the last 4 to 5 years back. And now it has, in a WhatsApp group, there are 4 groups in number, and in the Facebook page there are lots of people have joined. So hopefully in future we are planning to do one kind of event, that is the Geographers Meet, only the name Geographers Meet, where we can discuss these all kind of issues and all kinds of activities, what we should think in future for our future ancestors. So in that respect, I will not longer my speech with you. And I had already seen that several resource persons already joined from the different parts of universities, even government organizations. Thanks. Professor Pandey also joined. Yes. You may invite. So I share my sincere thanks to all of you once again, and all the participants. Hope after this lecture, after this brainstorming session, definitely you will get some extra inputs in your brain. So with this, once again, thank you, and I will hand over the microphone to our coordinators, our faculty, Bulu Bashak, and our project coordinator, Jyoti Pasi, to continue the session. Thank you. Thank you so much, sir, for your words. So it's time to invite our guest of honor, Dr. Bindi Pandey. He is a professor of Geography Department, Delhi School of Economics, University of Delhi. He has completed his PhD on the topic of hazard risk assessment and sustainable land development in Upper Beast Basin. He is also in the position of Dean University of Delhi, Secretary of International Geographical Union, IGU Commission on the Biogeography and Biodiversity. He has authored and edited 9 books on natural resources management, environment, ecology, and Himalayas. He also participated and chaired sessions and panel discussions and presented research papers in about 140 international national seminars, workshops, in India and abroad. Delivered over 80 lectures as resource person in various academic organizations. So I would like to invite you, sir, to speak for few words. Over to you, sir. Sir, am I audible? Please unmute Professor Pandey. Professor Pandey, am I audible? अभी जुड़े तो थे. He's there, but we should call. ज्वाइन तो कर रखा है उन्होंने.
सर फोन पे बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो अच्छा अच्छा, कोई फोन आ गया। जस्ट हाँ, कोई फोन आ गया अर्जेंट। Okay, sir. Maybe network problem, sir. Contact him. नहीं, वो एंगेज जा रहा होगा तभी पता चला होगा हमको। यस सर, ही इज एंगेज्ड इन फोन। सर तो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। Just wait for a minute, then we will start. तो सर रामेश्वर जी, आपके यहाँ नेक्स्ट किसका है प्रोग्राम? जी, नेक्स्ट 30 जनवरी सर, 30 जनवरी को। किसका है? नागपुर पे, नागपुर यूनिवर्सिटी के। हाँ, आपको दे रहे हैं सर, 1-2 दिन में दे देते हैं। सारे लोगों को दे देते हैं। जी सर। सर पांडे सर 2 मिनट समय मांगे हैं, तो थोड़ा दिया जा सकता है उसको। कोई बात नहीं। वो वाइस चांसलर्स के कोई मीटिंग चल रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग वो दूसरे घर में जाके बैठने की प्रस्तुति कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। पांडे सर डीन भी है ना, तो बहुत बिजी हो गए इधर काफी। यस, एक्चुअली वो डीन के बाद वो उसका थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गया है। और डीन नहीं भी थे तब भी बिजी थे, वो तो हमेशा एकदम मोबाइल। मदन लाल सूर्यवंशी जी, आप बताइए उधर क्या चल रहा है? बढ़िया है सब? हाँ सर, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं हमारे इधर। अच्छा, ऑनलाइन ही चल रहा है। अभी फरवरी में एग्जाम्स होंगे। अच्छा अच्छा। पैंडेमिक बढ़ता ही जा रहा है, हर दिन 1001 केसेस आती है उधर से। यहाँ पर भी चल रहा है, 400-500 केसेस चल रहे हैं। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अप्रैल एज कम्पेयर टू अप्रैल कम है, लेकिन केसेस तो हो ही रहे हैं। हाँ, डेथ रेट कम है बट हॉस्पिटलाइजेशन कम है। जी जी जी। इस बार तो कवर होता है। बिहार में सर सारे इंस्टीट्यूशन खुलने वाले थे आज, लेकिन 6 फरवरी तक बंद कर दी गई। हम लोग फिर घर में पड़े रह गए। फिर से बंद कर दिया। हाँ, फिर से 6 फरवरी के लिए बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात ये मदन लाल जी की हमारा जो बीए का बैच है उसको हम लोग देख ही नहीं पाए। फर्स्ट ईयर में आए, वो थर्ड ईयर होके चले जाएंगे, ये भी आज तक नहीं पता चल पाया कि हम लोगों ने किसको पढ़ाया। सही है सर। हमारे इधर भी बच्चे बोनाफाइड के लिए आते हैं, तो उनका रिसिप्ट देखना पड़ता है वही बच्चा है कि नहीं। पूरा सिस्टम में सर एक्सचेंज बन गया है ना, एक्सचेंज हो गया सर। लेकिन वो एक मेरे फ्रेंड थे, वो एमबीबीएस है, उनका जो एमएस करना था, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो कह रहे थे यार कोरोना के टाइम में कोई सर्जन ना प्रोड्यूस हो जाए। वो तो ऑनलाइन सर्जरी कर दिया होगा। सरकार की सारे पैसाएं बच रही है, कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं देना पड़ रहा है। सब लोगों को घर बैठे सब कुछ हो रहा है, न किसी को दिए हुए कुछ नहीं देना पड़ा, खर्च कर नहीं करना पड़ा, खिलाना पिलाना नहीं पड़ा है सर। ये अच्छा ही ना व्यवस्था मोदी जी का।
एजुकेशन सेक्टर का तो बड़ा हाल है सर, आगे जाके सबसे बड़ा नुकसान एजुकेशन सेक्टर का होगा। एक्चुअली सर बदलाव तो काफी सारे आया है, बट उसके हिसाब से अभी हम लोगों को भी अपना रास्ता तैयार करना पड़ेगा, ये पॉलिसी हाँ, प्लानिंग जो भी है, तो इसको भी तैयार, क्योंकि देखिए ये वन काइंड ऑफ बायो वर्ड आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी हम जो इतने दिन से सोच रहे थे बायो वर्ड क्या है, तो एक्चुअली ये ही बायो वर्ड ही है। तो बिल्कुल, ये आगे बिल्कुल। चल के और भी आ सकता है, और इसके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम अ वायरस व्हिच कैन बी प्रेडिक्टेड कि 23 जनवरी को इसका हाई पीक रहेगा, 11 मार्च को ये खत्म चला जाएगा। सो वन काइंड ऑफ मैनमेड बोल सकते हैं, और इसको प्रेडिक्टेबल वायरस भी बोल सकते हैं। 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था वो 3 साल था, तो लोग कह रहे हैं कि 19 में आया, 22 तक चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हुई तो लोगों को उम्मीद लग रही है कि 3 साल वो 100 साल पहले भी था, और 19 में आया ये तो 22 में चला जाएगा। लेकिन इसका दर्द वही जान सकता है जिसने झेला है। को लगता है मास्क जो है पुलिस को देख के लगा रहे हैं और दूसरों को कहने पे लगा रहे हैं मास्क, लेकिन जिसके परिवार ने इसको झेला है इसका दर्द वही जान सकता है। सही है सर, सही, बिल्कुल राइट। लेकिन सर अभी कुछ ज्योग्राफिकल स्टडी आ रही है कि वायरस जो है कि पहले क्या था, कुछ एरिया में ऐसा स्प्रेड होता था, अभी तो कौन सा भी रीजन ऐसा नहीं रहा कि जहाँ पे वायरस नहीं है। जैसे कि इक्वेटर पे मिल रहा है, पोलर रीजन पे भी मिल रहा है, ट्रॉपिकल एरिया भी मिल रहा है, सभी और फैला हुआ है ना सर। तो ये मैनमेड है या कैसा है, इस पे क्वेश्चन मार्क चल रहा है अभी। एक्चुअली यही टाइम है, ये मेडिकल जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसको फ्लरिश करना, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमारे बच्चे को भी। बिल्कुल सही कहा। मेडिकल ज्योग्राफी में पहले तो डेंगू, मलेरिया और ये सारी चीजें चलती थी, फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग, लेकिन ये कोविड के बाद काफी इसके डायमेंशंस चेंज हुए और काफी लोग इसमें काम करना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी। हाँ, ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बन सकता है फ्यूचर जियोग्राफी, मेडिकल जियोग्राफी के लिए। पांडे सर, आर यू हियर? मैं एक बार फोन कर लेता हूँ। अरे वाह, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार बीडब्ल्यू पांडे सर, नमस्कार। नमस्कार आपके इंतजार में हम लोग बैठे हुए थे। नमस्कार सर, सिद्दीकी सर, रामेश्वर सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। देखिए आपको हम लोग कितना प्यार करते हैं, आप देखिए। अरे चौधरी साहब से एक्सट्रीमली सॉरी। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। डॉक्टर विश्वजीत, वो ऐसा है ना कि पांडे सर जब कोलकाता के लिए चले दिल्ली से, तो प्रयागराज में उनके 2 जिगरी दोस्त रहते हैं, तो थोड़ा यहीं रुक गए थे, आपको बता दिया इन्होंने, मीटिंग चल रही थी। सर एकाएक अचानक आज सुबह फोन आया और अर्जेंट एक मीटिंग चल रही है, अभी चलेगी रात को 8 बजे तक। वो प्रयागराज में आप रुक के ही जाएंगे आगे, आप कहीं भी वर्चुअल हो या फिजिकल हो, वर्चुअल हो या फिजिकल हो, थोड़ा ब्रेक यहाँ लिया आप, तब कोलकाता पहुंचे आप। चौधरी साहब, मतलब थैंक यू कि आप सिद्दीकी साहब को ले आए। कोई नहीं। हाँ सर, या सर इनिशिएशन तो पायनियर से किया जा सकता है ना। यस, एग्जैक्टली। So, sir, I think we should start, and already our coordinators has invited you, so you may start, sir. Okay. No issue. Okay. Thank you. Would you like to share your screen?
Yeah, I'm going to share. So Bulu, please turn up our screen. Yes, sir. I start my screen. Is it visible, sir? Yes, sir. Hope it is visible. Yes. No, thank you, sir. So, first of all, respected Professor A.R. Siddiqui, sir, Dr. Vishwajit Roy Chaudhary, Director of SAIARD, Dr. Rameswar Prasad ji, Dr. Madan, and all other colleagues who have joined. I'm unable to take all the names, so all the colleagues and participants who have joined, with due respect, I do like to congratulate Dr. Vishwajit Rai Chaudhary for organizing such a kind of platform where the young generation, young scholars, they find very valuable and highly learned words from professors like Professor A.R. Siddiqui Sahab. And friends, I really say, जो लफ्ज जो वर्ड्स सर के निकलते हैं ना, मजा आता है सुनने में, and you will enjoy. I will cut because I have to within 5-10 minutes. I will leave, so I will cut short, and you will be more opportunity to listen Professor Siddiqui sir. So the theme of the discussion of today was chosen by Dr. Vishwajit Rai Chaudhary Sahab, a changing definition of geography from traditional to modern and further in future. Because the nature of geography itself is dynamics. And we have experienced the shift of the paradigm in geographical studies, environmental studies, and these changing paradigms are very much observed, right? Changing from the determinism, environmentalism, to over a paradigm shift to the possibilism. And the two schools, there's a dualism in geography emerged. And then, again, there is a dynamics, there is change. The number of geographers who brought down the solution between the domain of determinism and the domain of possibilism, so that neo-determinism emerged. Neo-determinism emerged, which is prevailing, balancing the conditions between the two, determinism and possibilism. One side, the hybrid technologies, hybrid impacts, hybrid innovations are supporting the possibilism. On other side, natural hazards, natural disasters, volcanic eruptions, flash flood, drought, all these phenomena which are still reminding us that even today,
nature controls the phenomena. So the kind of dualism which had started prevailing even today, in spite of the hybrid technology and hybrid conversion of time and scale. Friends, these changing paradigm now has changed over a phenomena. The nature and scope of geography, which was defined by the ancient geographer, that geo and graphy, description of the earth, this was basically called geography. Definition of the geography, geo and description means description of the earth. Then after the introduction of the hard sword, the modern geographers, there was inclusion of spatial analysis. That is, spatial analysis now defined the nature of geography once again, that geography is the subject which describe the land and people. So the description of earth changed to the description of land and people. तो अर्थ के साथ साथ second dimension, the people of this planet, their analysis, their description, spatial distribution, and spatial distribution of resources and all that, changing the landscapes, anthropogenic impact. So definition, geography, description of earth, changed to description of land and people. And now, the scope of geography expanding further at present and future. In future, we are going from geography to cosmography. Now, friends, the kind of lifestyle people of this planet are living, exploiting the resources. If you take example like all the people of this planet behaves like South Korea, or behaves like Switzerland, Great Britain, Italy, Norway, Japan, even United States of America. We need 5.5 Earth to sustain the need and supply of the resources of the modern people, of the present people. But we have only one Earth. Only one Earth. And many countries, their citizens are exploiting the resources. If all the people of this planet behaves like the same, we will require 5.5 Earth. So people are looking beyond the Earth. We are looking the minerals of the moon, huge deposits of the gases on our satellite on the moon, resources of the Mars, resources of the Jupiter. The explorations are going on. Possibilities are exploring. And the nature of change in geography in the future is from geography to cosmography. Friends, you can see how
the definition of the geography changing with due course of time. Geography, geo plus graphy, land and people, now the earth and the other planets of the solar system, cosmography. Then, beyond that, now, as you know, it is very difficult to find out the origin, beginning and end of the space. अभी तक तो हमने ब्रह्मांड का ही पूरा पता नहीं लगा पाया. We are unable to find out the universe. One side, we are unable to discover entire space of the universe. Another side, there is a talk and discussions of the meta space. Virtual universe and the kind of hybrid technology, digital world are transforming the human mind, nature, transforming the human mind and nature. आज हालत ये हो चुकी है कि यदि आपको एक वक्त का, 1 जून का एक वक्त का रोटी न मिले, आपको खाना न मिले, चलेगा, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा यदि आपका डेटा खत्म हो गया मोबाइल का, या मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. Whether it is a need or it's a habit, and the same going to transform in the future. Virtual space, virtual universe. And so many companies are creating the virtual countries in the virtual universe, where you will find a virtual visa in the form of fees. Then you will be able to travel virtually in another country. To travel in the virtual country, you require a virtual visa. And the countries are being named virtually. Their embassies in the form of the office of the companies are coming to the mega cities where you can buy the virtual space. The kind of, not only the transfer of technology, it is also the transfer of mindset. Changing behavior of the people. And meta science, meta space, meta universe, the concept which is changing, transforming. This is the phenomenal change in the geography from traditional to modern and the postmodern. Then coming back on the ground reality, being a student of geography, scholar of geography, a teacher of geography, we always remain on the ground. हमारी शुरुआत तो भूगोल से हुई है, जियो से हुई है. We cannot leave the geo. Maybe the 3rd generation, 5th generation can leave the geo, but in our life, because our nature, our learning, our teaching, our culture are directly related to the geo, that is earth, that is field. So even there are transformation in the field work. So earlier it was called as field work. Now from field work to field investigation. Field investigation
constructing your hypothesis, setting up your objectives, and then finally validating your objectives whether it has been fulfilled or not. So if you have constructed a research question or hypothesis and you are unable to validate your objectives, your research is null and void. Your research findings now, it's more and more depend on the validation in the field, on the ground. And then rather searching the research problem, from research problem, now you have to find the impactful policy. Impactful policy. Research problem to impactful policy. No, now the either ICSSR or DST or UGC, they're not going to give you project for writing a thesis. No. Now in the future, all these projects will be based on the impactful policy research. And already ICSSR had already initiated IMPRESS scheme, impactful policy research. Already started, already initiated. Research problem to research policy, and that should be impactful policy. And these impactful policies now depend on your field validation, field work. Friends, in this regard, I'd like to tell you, I have enjoyed that the traveling on the ground to traveling in the air from Haridwar to Kailas, Shivalik to Shivalaya, because my specialization is the mountain. So traveling from Shivalik to Shivalaya as a latitudinal extent, to Thang to Tawang as a longitudinal extent of the Himalaya. And from Shivalik to Shivalaya, from Thang to Tawang, all the construction of the hypothesis, development of the objectives, field investigations, and finally the validation had brought out number of ground reality, number of the findings which varies. Therefore, each region have different approach and different methodology of field investigation and validation. Foothills of lower Shivalik, foothills of upper Shivalik have different nature of the slope and altitude. Lesser Himalaya, greater Himalaya have different nature of the problem. One side there is a diminishing of the forest land, the other side the melting of the glacier. So different altitude, different latitude, different longitude have different variations, complexity of the research questions and the solutions. Similarly, Jaskar, Ladakh and Karakoram. If you go detail each and every region, you will find they, being a mountain, one mountain has a unity, you find diversity among each other. Nature and conditions of the Shivaliks are different from the Middle Himalaya. Middle Himalaya different from the Greater Himalaya. Greater Himalaya different from the Jaskar. Jaskar is different from Ladakh. Ladakh is different from the Karakoram. All these regions, but one solution.
Friends, one solution from macro to micro. Macro as a watershed management and micro as a springshed management. साथियों, crux and conclusion is either at the macro level or at the micro level. You will find the watershed management to springshed management involves local initiatives for ecological restoration and re-strengthening the mountain ecosystem through new initiatives and local indigenous knowledge. Local indigenous knowledge are the asset because their vast history of adaptation, acclimatization, they have very, very rich local indigenous knowledge which they have learned through the history, through the incidents, through the experiences, which provide them base for re-strengthening and establishing the initiatives for enhancement of ecosystem services through ecosystem restoration. साथियों, कितना भी कॉस्मोग्राफी हो जाए, कितना भी वर्चुअल स्पेस हो जाए, at least we cannot eat the technology, we cannot eat the steel, we cannot eat the gold. For that, for our food, for the survival of our body, for the food, for the mental health. Finally, ultimately, we come back to this earth and we need jal, jungle, and jameen. We need good food, we need good air, and we need good water. Good air, good food, good water, no alternatives. No alternatives. And all these are free. पानी नदी में बहता है, हवा बह रहा है, sunlight plenty है, they're all free. But many of these ecosystems have been degraded that need to be ecosystem restoration. So initiatives for enhancement of ecosystem services through ecosystem restoration and restoration of the jal, jungle, and jameen, the basic need. जैसे कुछ भी कितना भी डेवलप हो जाए, आज भी मनुष्य का बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान, उसको अवॉइड नहीं कर सकते. उसी तरह आज भी जल, जंगल एंड जमीन, we cannot avoid. We need to restore the ecosystem services. And time has come, go back to the nature. Go back to the nature. You cannot live longer time in virtual space. Finally, we have only earth. We have only earth which needs your attention. We have only earth on which we are surviving, and we have to give value with time and the space to the planet, to this earth. Thank you so much. Thank you, sir. Congratulations. Very nice. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for your time and your wonderful, valuable speech. If any of the participants have a query, you may come forward and clear those. Yes, please. Sir, I have just a queries, just not a queries, just one of my curiosity, you can say, that before you have joined, I just talked to the podium, especially to Siddiqui sir, that after this corona, there are lots of changes has happened, and especially in health sector and all that, and socioeconomic parameters also. So do you think that these changing phases, we have to catch up through this through our subject, as that it can be a part of our research, it can be a part of our curriculum,
for future, especially in case of health geographic sector or medical geography sector, even socio-economic geography sector, special settlement sector. Because whatever I know that in case of Delhi, in other states also, Delhi में भी वैसा हो रहा है कि जो लोग पहले 3 कमरे में रहते वो अभी 2 कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, जो 2 कमरे में रहते थे वो अभी 1 कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं. तो there is a lots of changes that happened due to this COVID. So do you think that in coming geography syllabus, in coming geography curriculum or research, we should focus on that changing phase, the 2 years which we have already faced? Yeah, thank you, Dr. Chaudhary. No doubt, a lot of research is going on COVID in various subfield of the geography. Say including the economic geography, impact of COVID-19 on economic geography, social behavior, and particularly the medical geography, health geography. So many research are going on. Even the spatial analysis of the COVID. So many research is going on. So definitely, we have now crossed the 2 years. Many conclusion is coming. But in meantime, COVID itself changing its nature, of course. So it is too early to say, but definitely, in the curriculum of geography or many other subjects, like other subjects, there will be one chapter, one lesson, one paper of COVID-19, definitely in the modern advanced syllabus of geography. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Siddiqui sir, Thank you. I have to rush to the meeting again. आप अपना शेयर तो सुनते जाइए. बस आपने सर आते ही कहा तो मैं विश्वजीत जी से बताना चाहता हूँ कि एक शायर थे, उनका नाम था शहरयार. उन्होंने उमराव जान नाम की एक फिल्म बनाई थी, रेखा उसमें थी, बहुत फिल्म चली वो. तो जब भी हमारे प्रोफेसर BW पांडे जी आते हैं तो उनके लिए मैं शेयर कहता हूँ कि इन्होंने कहा ना कि सिर्फ हमारे पास एक ही दुनिया है और हमें ये फर्क है कि उस दुनिया में हमारे पास प्रोफेसर BW पांडे हैं. तो उनके लिए एक शेर है कि जिंदगी जब भी तेरे बस में ले आती है हमें, ये जमीन चांद से भी बेहतर नजर आती है हमें. आपकी मीटिंग है, इतने सारे फोन आ रहे थे, मैं देख रहा था. और एक शेर और भी सुनते चाहिए, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो यही बात सताती है हमें. तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. मैं भी पीछे नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं डार्क साइड में मैं भी एक कवि हूँ. तो हिंदी में भी मैं 2 पंक्ति बिंदीवासिनी पांडे और सिद्दीकी सर सबके लिए, दोनों के लिए सुनाता हूँ. ये जो कोविड आ गया है, कोविड के बाद जो न्यू नॉर्मल चेंज वगैरह है, तो इसको लेकर ही हमने सोचे थे. एक पल की हमें बेपनाह कर देती है दूरिया, एक पल की हमें बेपनाह कर देती है दूरिया, एक पल की हमें पनाह देती है. ये दूरिया ही तो है जिससे हम रहते हैं दूर, पर कभी कभी ये दूरिया ही हमें अपने आप से और अपनों से मिलाती है. क्या बात है, बढ़िया. थैंक यू फॉर योर ग्रेट. Thank you, Chaudhary Sahab. Thank you, Siddiqui sir, Rameshwar Prasad sir, all my colleagues, dear students. Thank you so much, sir. माफी मांगते हैं. Extremely sorry, you have to join. जी सर, थैंक यू. Thank you, sir. Okay. Proceeding further, I would like to invite our next guest of honor, which is Dr. A.R. Siddiqui, the Professor, University of Allahabad, Prayagraj. He started his initial career from Chaudhary Charan Singh University of Meerut in the year 1999 as lecturer. Later, he joined University of Allahabad in 2001. He has obtained PG diploma in Geoinformation Science, specialization in geohazards from IIRS Dehradun and ITC the Netherlands. His specialization is in the arid zone research, urban environment issues, and applications of remote sensing in GIS and land degradation studies. He has supervised 13 PhD students. He has also published 38 research papers in peer-reviewed journals. He is the author of 3 books. He is a recipient of Excellence Award in the year 2018 by the University of Allahabad. Now, from the 2016, he is holding the post of Secretary General Indian Institute of Geomorphologists. Sir, I would like to invite you to speak few words. Over to you, sir. Thank you, Jyoti, for your kind words.
मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर विश्वजीत चौधरी for organizing this very nice program on very pertinent theme. Professor B.W. Pandey, Professor Rameshwar ji, Dr. Madan Lal Survanshi ji, and all the participants and all the teachers, those who have joined this program. And I would like to congratulate and I would like to thank Dr. Vishwajit because this is very pertinent topic. And I would like to congratulate Professor B.W. Pandey because he has highlighted dimensions of the geographical shifting, and he narrated very beautifully in the discipline of geography. There is a shift of knowledge from geography to cosmography, from space to meta-space, from field to field investigation, from research problem to impactful study in the field of geography. And you might be noticed he has given a very emphasis to local area, means specific knowledge. If you are working in the field of geography, so the knowledge of local people is very important. And he has given about the researchers in the field of area specific knowledge. As you recall the work of Vidal Lablache, he has given a term PACE. PACE means Vishesh Jeevan Patti or way of life of the people. So nicely he narrated his talk. And but geography, you have given topic. This is a very general topic, and I would like to move fastly because this is the issue of 2000 years from the Homer to modern time. And for a student, I have prepared a syllabus, and those who are preparing for civil services examination and those who are in UG and PG, and they are diverted their interest from human geography to geomorphology. But as a geomorphologist, I would like to make requests all of you. First of all, now you take what is the basis of geography and what are the background of the geography. That's why I think I should discuss what is the journey of geography from ancient classical period to modern time. Then in the meantime, I will discuss the approaches and shifting of knowledge from ancient classical period to modern time. तो I would like to share my PPT. और रामेश्वर जी बीच बीच में जो हमारी स्लाइडें आएंगी तो उसको मैं स्किप भी करता जाऊंगा, लेकिन जो ईयर्स हैं, जो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और मुझे लगता है कि थोड़े हमारे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये थीसिस हो सकती है कि उसको जो है जो स्लाइड देखेंगे उनसे उसको अंदाज़ा मिलेगा कि आने वाले दिनों में अपने सब्जेक्ट की जो फाउंडेशंस है उसकी नॉलेज को किस तरह से लेते हुए आगे अप्लाइड एस्पेक्ट में वो जाएंगे। तो आई हैव चूजन अ टॉपिक, यू हैव गिवन changing definition of geography from traditional to modern, but I will move fast because I have near about 70 slides, but I will present here 40 to 45 slides. As we know, this is the most accepted definition of geography and widely accepted definition of geography, which have been given by Richard Harshon. Geography is concerned to provide accurate, orderly, and rational description and interpretation of variable character of Earth surface. ये सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली परिभाषा है ज्योग्राफी की, बट वी हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ ज्योग्राफी as mentioned by Professor B.W. Pandey, from geography to cosmography, from space to meta-space, all the dimensions have been included in the discipline of geography. You see here, there are three things important. This is very important to know what is the philosophy of subject and what is the subject matter of the subject and what is the methodology. What type of methodology we are going to use to solve any complex problem of the society or any complex problem of the world. So these are the perception like geography as a description of the earth. He rightly mentioned about the Eratosthenes. Geo means earth, graphy means description. So geography as a description of the earth, geography as a description of interrelationship and interaction, geography as a description of regions and complexities of region, geography as a synthesizing science, geography as a description of spatial integration, geography is an interdisciplinary science and description of limitation of mathematical and statistical procedures,
and geography as a description of behavioral aspect, and geography as a description of solving applied aspect. इन इस स्लाइड में आपको भूगोल के ज्योग्राफी के सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि फिलॉसफी सब्जेक्ट मैटर और मेथोडोलॉजी, विषय का दर्शन, विषय का विषय वस्तु और विषय का विधि तंत्र यानी टूल्स एंड टेक्निक्स. तो वी हैव टू नो अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द सब्जेक्ट, वी हैव टू नो अबाउट द सब्जेक्ट मैटर of the content of the subject, and we have to know which type of tools and techniques and which type of data we are going to adopt for the analysis and interpretation and generalization of the subject. So in this way, this slide is very important for a student for knowing the dimension of the geographical studies. Now you see, and in another aspect we have taken, dichotomy means dualism, traditional versus applied, as Dr. Bishwajit Chaudhary given topic. So philosophy, what is the philosophy of geography as a subject? Because we all consider Earth as a home of man. You cannot exclude man from the dimension of the Earth. There is no issue of studying physical geography or geomorphology, but Earth is made for human being. Earth as a home of man means man is the central theme of geographical studies. Man is the theme of central theme of geographical studies. And another Sir, important, sir, sorry to interrupt. Sir, you are not sharing the PPT. पीपीटी नहीं आ रही है, एक मिनट No, दोबारा sir. करिए. No, sir. Please share it with us. ओके ओके, Thank you, sir. हाँ श्योर, उधर से अलाउ करिए. ऐसा क्यों हो रहा है? आया? Sir, you have to share your screen and then you can नहीं, share your PPT. मैं तो कर रहा हूँ, असल में आईपैड से कर रहा हूँ, तो वो तो हो तो जाता है. मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? Yes, sir, you are visible but not your screen. रुक जाइए, ऐसा क्यों हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए. एक मिनट और दूसरा प्रयास कर रहा हूँ मैं. उधर से अलाउ करिए आप. ओके सर, ओके ओके, आ रहा है सर. ओके 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 ओके, तो मैं दोबारा उसको दिखा देता हूँ, पहली स्लाइड.
आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, प्लीज चेक इट। सर का शायद कोई इंटरनेट इशू आ रहा है, लेफ्ट हो गए, ज्वाइन कर रहे हो। हो जाएगा, वेट किया जाए, वेट प्लीज वेट, हो जाएगा। हाँ, वो ज्वाइन कर रहे हैं। सर का नेटवर्क में कुछ इशू हो रहा है। सर कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, वो लिंक। वो कर लेंगे, दूसरे दूसरे सिस्टम से कर रहे हैं, वो हम प्रयास में है, हो जाएगा सर, आप वेट कर लें, हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेटवर्क का इस समय। नेटवर्क न्यू नॉर्मल सिचुएशन में क्या किया जा सकता है।
हेलो विश्वजीत सर, हेलो। बोलिए बोलिए। तब तक ले कुछ आप अपने इस प्रोग्राम के संबंध में कुछ बोलें, तब तक कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ अपना आगे बढ़ाइए उसको किसी के द्वारा। कोशिश कर रहा हूँ सर से कम्युनिकेट करने के लिए। सर 1 मिनट रुक जाते हैं, हम सर को एक बार कॉल कर लेते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट हमारा जो स्पीकर है सूर्यवंशी। बेस्ट 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 हाँ सर, हाँ सर, हर टाइम तो कर देंगे हम। सर को पूछिए एक बार। यस एक बार Okay, मैं sir, we will wait, sir. हाँ सॉरी, We will wait, sir. एक सेकेंड जस्ट, एक बार कॉल कर देता हूँ। Okay, sir. हाँ सर ज्वाइन कर गए हैं। ओके। I'm sorry, there was some disturbance on I think internet. That's why I'm again with the laptop. तो अब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 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 सही सर, आगे बढ़े। कोई बात नहीं, मैं अब इससे शेयर कर रहा हूँ और आधे घंटे में समाप्त कर दूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा तेज चलूंगा। हमारे पार्टिसिपेंट चले तो नहीं गए? नहीं जाएगा सर, आपको छोड़कर कहाँ जाएगा? हम इलाहाबाद खोज के गए थे जी। ओके, स्लाइड दिख रही है? Yes, sir. ओके, तो मैं Yes, sir, it is visible. So these are the different perception of geography. I've already mentioned about there are different perception of geography. Geography as a synthesizing science. Geography as a description of spatial integration. Geography as interdisciplinary science. There is one important thing: description of limitation of mathematical and statistical procedure. And there are three important aspects like for geographer it is very necessary to know what are the philosophy of the subject, what are the subject matter, and what type of methodology we are going to use in which type of study. So this is the very important thing. Philosophy, as we have mentioned about Earth as a home of man, and dimension of diversity is also very important because man is the central theme of geography, and we have to know all the dimension of geography in the context of subject matter of geography, and we have to understand what are the linkages to geography with many other disciplines, and what is the methodology like use of statistical techniques, field observation as mentioned by Professor B.W. Pandey ji also, and what are the qualitative and quantitative techniques. Now we are shifting towards major shift towards surveying, then use of computer, then use of satellite type data, then use of geoinformation science in geographical studies. But remember the work and contribution of ancient period. I would like to mention the development geography during ancient classical period, and now you recall the work of Assyrian of West Asia.
Babylonians, Sumerian, Egyptian, and Phoenicians, because Babylonian people was well developed in the field of agriculture, in the field of science, astronomy, and they used sexagonal method of calculation. An idea of 360-degree angular measurement of circle was given by Babylonian, and likewise Sumerian invented alphabet and cuneiform script. So these are the important aspects. And you now recall the contribution of Homer. He has given regional description and relation between man and nature. His work contains not only information related to weather, climate, and distinguished human characteristics, and he has given idea about winds, whether it is Boreas, Notus, Zephyrus, and Eros, and conception of Earth was given by Homer. And there are some other explanation have been given by Homer, and that time during 800 BC, description of different places, study of shape of Earth, and study of heavenly bodies. So these are the very important aspects. But you see here the contribution of father of mathematical geography like Thales and Anaximander. So determination of location of different places was given by Thales, and this was the major work on that time, because in the Ptolemy work you will find Ptolemy has given determination of location of 8,000 places on the world map. But the Thales during that time, before BC 560, around 560, he has given the idea about the determination of location of different places on Earth's surface and interpretation of different celestial phenomena and cause-effect relationship. Still, we are studying cause-effect relationship. And the contribution of Anaximander, you are also knowing. He was the first man to write prose, and he was first map to prepare word map on scale. And the concept of idealism was given by Thales. So this was the contribution of father of mathematical tradition in geography. And Homer was father of literary tradition in geography. So you see, this is another Greek scholar. The work of Greek scholar you might be knowing, Hecataeus, 550 BC to 476 BC. Hesperides was a famous writing and famous book of Hecataeus. He has given a description about Europe, Asia, and Libya. He is known as father of regional geography and introducer of dualism or systematic and regional geography. मॉडर्न टाइप में आप कांट और वेरियस को पढ़ेंगे और दैत्यवाद की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हिकैटियस जो है दैत्यवाद को इंट्रोड्यूस कर गए थे और प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी में बहुत सारे काम कर गए थे. लेकिन हेरोडोटस का जो वर्क है, अगर आप देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिसाइज लोकेशन ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, तो हेरोडोटस को भी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑल हिस्ट्री must be treated geographically and all geography must be treated historically. तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पेस. और चाहे वो आप टी हैगर स्ट्रैंड को पढ़ें या किसी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, समय और स्थान के रूप में ज्योग्राफी को पढ़ने की बात सबसे पहले हेरोडोटस, जो फादर ऑफ हिस्ट्री जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली और ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली. और उन्होंने और भी मेनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्राइब्स. एंड हेरोडोटस वाज फर्स्ट इथनोग्राफर, फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, फादर ऑफ हिस्ट्री. एंड प्लेटो फाउंडेड फर्स्ट एकेडमी. दुनिया की सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो है प्लेटो ने उसकी स्थापना की थी. फाउंडर ऑफ डिडक्टिव मेथोडोलॉजी, डिक्लेयर्ड अर्थ एज राउंड. तो ये जो हम ग्रीक स्कॉलर की बात कर रहे हैं वो इसलिए कि ट्रेडिशनल में जब जाएंगे, यानी कहने की बात है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी. ऐसा नहीं है कि हम क्लासिकल पीरियड को छोड़ के मॉडर्न टाइम में ज्योग्राफी के सारे एस्पेक्ट को पढ़ें. ये सारी चीजें ऑलरेडी ग्रीक स्कॉलर जो जिनको क्लासिकल पीरियड का पैनियरिंग रिसर्च के लिए जाना जाता है, अगर इनके वृत्तांत को पढ़ेंगे और ज्योग्राफी के फिलॉसफी को, सब्जेक्ट मैटर को, मेथोडोलॉजी को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का बहुत सारा कंसेप्शन दूर हो जाएगा. एंड ही फाउंड द डिफरेंस बिटवीन अर्थ सरफेस एंड स्पेस. डिफरेंस बिटवीन अर्थ सरफेस एंड स्पेस. स्पेस में और अर्थ सरफेस में क्या अंतर है.
फादर ऑफ टेलियोलॉजिकल फिलॉसफी, इसको मॉडर्न टाइम में भी पढ़ते हैं, यानी इंडक्टिव मेथड। और इसके आगे लिखा हुआ गो एंड सी, हम फील्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, अभी प्रोफेसर BW पांडे जी ने बात कही, प्लेटो ने ये बात कह दी थी बहुत पहले, गो एंड सी, जाइए और देखिए। इट मीन्स ज्योग्राफी इज सब्जेक्ट related to the observation of the earth features, composition of earth and space, relationship between latitude and habitation, अक्षांशों के अनुसार किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है, उसकी भी बात ज्योग्राफी ने आज से नहीं 2000 साल पहले ये बात कही जा चुकी है। रिलेशनशिप बिटवीन लैटिट्यूड एंड हैबिटेशन, इट मीन्स स्टडी ऑफ इक्यूमीन एंड नॉन इक्यूमीन रीजन। और उसके बाद अलेक्जेंडर की बात अगर आप करते हैं तो अलेक्जेंडर डिस्कवर्ड न्यू लैंड्स एंड एरियाज। अलेक्जेंडर आल्सो स्टडीड अबाउट द डिफरेंस इन ह्यूमन नेचर विद एनवायरनमेंट, डिफरेंस इन ह्यूमन नेचर विद एनवायरनमेंट। अब आप चाहे बिहेवियरल ज्योग्राफी में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, लेकिन अलेक्जेंडर जब उन्होंने बहुत सारे देशों में आक्रमण किया था तो उन्होंने भी डिफरेंस इन ह्यूमन नेचर विद एनवायरनमेंट को रिलेट करके बात की थी। मैन एनवायरनमेंट का रिलेशन में ज्योग्राफी का अध्ययन किया था, लेकिन ज्योग्राफी तब तक वो शब्द नहीं था। और एरोडोथनीस का जब टाइम आया तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एज ए होम ऑफ मैन, ये बात एरोडोथनीस ने कही थी सबसे पहले कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एज ए होम ऑफ मैन। और बाद में फिर मॉडर्न टाइम में हम लोग आते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात करते हैं, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ नेचुरल ज्योग्राफी, या हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। Alexander von Humboldt defined geography as a description of the earth along with the interrelationship of phenomena found in an area, along with the interrelationship of phenomena found in an area। अब एक स्थान पर किस प्रकार के रिलेशनशिप, किस प्रकार की सामंजस्यता, किस प्रकार का एकोमोडेशन दिखाई देता है ज्योग्राफी में, ये बात कह रहे हैं हम्बोल्ट। और कार्ल रिटर को भी आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, इंटररिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। तो ये जो वर्क है, चाहे वो कार्ल रिटर का हो, हम्बोल्ट का हो, हिकाइटियस का हो, होमर का हो, स्ट्रैबो का हो। अब जैसे आप देखिए स्ट्रैबो के भी काम में अगर आप देखिए, मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ, झलक दिखा रहा हूँ और थोड़ा तेज भी जा रहा हूँ, वो इसलिए कि मुझे अपना टॉपिक खत्म करना है। तो स्ट्रैबो के वर्क में भी अगर आप देखेंगे, पायनियरिंग वर्क इन रीजनल ज्योग्राफी and in the field of historical geography, and you can see the work of Strabo in the context of geopolitics also. He has written Geographica, and he has given deterministic view to highlight nature control on man activities. Now you see the work of Ptolemy Almagest. He has written this book on the basis of on the basic fundamentals of astronomy, invented mathematical models on that time। आप देखिए, हमने चाल्डियन की बात की, सुमेरियन की बात की, फोनेशियंस की बात की, इजिप्शियन की बात की, सुमेरियन की बात की, लेकिन उस समय पे भी बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारे गणितीय और मैथमेटिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन था। लेकिन टॉलमी ने भी ये बात कही और मैथमेटिकल मॉडल्स की शुरुआत उन्होंने की। और उसके अलावा प्लैनेट सन, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, आर्ट ऑफ मेकिंग साइंस, द गाइड टू ज्योग्राफी, और ड्रॉन 26 मैप ऑफ डिफरेंट एरियाज। 26 मानचित्र उन्होंने बनाए थे, 26 मानचित्र बनाए थे और आइडेंटिफाइड डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। टॉलमी को अल बरूनी में आप जाएंगे, अल तहदीद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अल तहदीद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अल रिसाला डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, अल इदरीसी amusement from him who desired to travel around the world, described economy, topography and cultural attribute of various regions of Asia and Africa. Ibn Khaldun, he has given a wonderful idea in his writing. He has written the Muqaddimah, Muslim views on history, society and political affairs. Al-Masudi, he has given a wonderful narration and description about the monsoon, Indian monsoon and climatic characteristics. और ये इसके बाद जो बात खत्म होती है, अगर आप इस स्लाइड को देख लेंगे, और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन भूगोलवेत्ता ने नहीं दी थी, अर्थशास्त्री ने दी थी, लेकिन 1826
और विश्वजीत जी, ये टॉपिक ऐसा है कि 200 साल से सिलेबस में बना हुआ है, 2026 आने वाला है, लेकिन एमए और बीए के सिलेबस से थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन का जो प्रासंगिकता है, जो रिलीवेंस है, वो बनी हुई है। और कौन ये कह देगा कि एन एसे ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जो कि रॉबर्ट माल्थus ने लिखा 1798 में, कौन ये कह देगा कि लॉ ऑफ माइग्रेशन E.G. रेवेंस्टीन ने लिखा 1882 में, और उसके अलावा ज्योग्राफिकल साइकिल बाय डेविस इन 1999, ज्योमॉर्फिक इक्वेशन एंड प्रोसेसेस ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, ये जो पायनियरिंग वर्क है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेजर नेचुरल रीजन A.J. Herbertson, which was given in the year 1905. Theory of industrial location was given by Alfred Weber in 1909. Central place theory 1933, given by Walter Kistaller, and many other urban ecological theories like concentric zone theory by E.W. Burgess, sectoral theory by Homer Hyatt, C.D. Harris, and some soil studies related to soil studies, the contribution of Janey in the modern time. Natural forest classification was given by H.G. Champion in 1941. Agroclimatic region is also a very important study. Copen's classification, which was given in 1901, 1918, and 1936. Agricultural classification was given by D. Whittlesey in 1936. C.W. Thornwell classification was given 1948. And determination of urban hierarchy, rank size rule, law of primate city, everything is important. ये मैंने आपको झलक दिखाई एक ज्योग्राफी की, बहुत फास्ट में गया हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि समय की कमी है, वरना मैं और डिटेल्स इसको बताता। लेकिन अब आप ये बताइए कि ट्रेडिशनल जो टाइम में जो हमारा फिलॉसफी है, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारी मेथोडोलॉजी है, वो डिस्क्राइब करने की, ज्योग्राफी वाज डिस्क्रिप्टिव, हम वर्णन करते थे। नाउ यू सी अनदर फेज ऑफ ज्योग्राफी, use of statistics, use of mathematics, and use of computer language in the discipline of geography. We were using statistical techniques for the interpretation of our subject. We are still using application of standard deviation, application of correlation and regression, coefficient of correlation, line regression, rank correlation, factor analysis, sampling, principal component analysis, chi-square test, student t-state, F-test, Z-score, Carl Pearson experiment. We are still using the level of land use classification, and in geography, areal unit is important, whether you are working on micro region or meso region or micro region. Many of PhD have been submitted, but students are not clear on which unit you are working. Are you aware about the scales? Are you aware about on which scale you are working? So landform unit is very important, and then we can make our study proper. And we are not having knowledge about sub watershed, milli watershed, micro watershed, and mini watershed. What will be the geographical area of mini watershed? What will be the geographical area of micro watershed? What will be the area of milli watershed? So these are the important aspects. Now another phase of geography, you see the time of Varenius and Immanuel Kant from 1620 to 1650. The concept of generalization was started, and he has given about the concept about absolute part. Absolute part means description of all that appears on the surface of the earth. Description of all that appears on the surface of the earth. What is the meaning of, what is the concept of relative part, and what is the concept of comparative part? And he has also given idea about the dichotomies, whether it is related with the physical geography or whether it is related with the human geography. And he has given idea about the dichotomies, whether it is related with the systematic geography or regional geography, human geography, general geography, or special geography. So description of celestial part, terrestrial part, human part. तो दिस मतलब ये फेज भी आसानी से आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब हमको शाखा विभाजन के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में, ज्योग्राफी के ब्रांचेस के बारे में पता चला इमैनुअल कांट के समय पे, और मेथड ऑफ ज्योग्राफिकल रिसर्च एंड प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, एंड ऑन दैट टाइम वी वेर हैविंग नॉलेज अबाउट द इंडक्टिव मेथड, and we at that time we were having a knowledge about the logical reasoning and deductive method and classification and organization of knowledge acquired. He has explained about the classification and organization of knowledge acquired.
लॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, टैक्सोनॉमी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इथिकल ज्योग्राफी, कॉमर्शियल ज्योग्राफी, थियोलॉजिकल ज्योग्राफी, ये सारी ब्रांचेस थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात उन्होंने की, उन्होंने क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज, परसीव्ड नॉलेज। जब हम ज्योग्राफी में जाते हैं, चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: परसेप्शन ऑफ द फिनोमेना, मेजरमेंट ऑफ द फिनोमेना, वेरिफिकेशन ऑफ द फिनोमेना, जनरलाइजेशन ऑफ द फिनोमेना एंड वैलिडेशन ऑफ द फिनोमेना। तो उन्होंने भी उस समय पे सारी चीजों की बात की थी। तो क्या इस फेज को आप इग्नोर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योग्राफी का बेस ही आपको यहीं से मिलता है। अब देखिए, जर्मन स्कॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो हम मॉडर्न में अप्लाइड एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं और उसके रिलेवेंस की बात कर रहे हैं, अप्रोच डाइवर्जन की बात कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने नहीं किया था? नाउ यू सी द वर्क ऑफ हम्बोल्ट, ही यूज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड हम्बोल्ट यूज 40 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 40 तरह के औजार, 40 तरह के उपकरण, 40 तरह की चीज लेके जाते थे हम्बोल्ट। और उन्होंने बहुत 60,000 माइल को ट्रेवल किया था और ऑब्जर्वेशन के आधार पे बहुत सारी, फील्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पे बहुत सारी बातें की थी। तो ऐसा नहीं है कि हम फील्ड में जाके, वो उस जमाने में भी हम्बोल्ट ने 40 तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए फील्ड ऑब्जर्वेशन के बाद ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन लिखे और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए अपनी बात कही। प्लेस ऑफ ज्योग्राफी एज ए अर्थ साइंस इन द डोमेन ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक अप्रोच, ही यूज्ड सिस्टमेटिक अप्रोच। ही हैज रिटन कॉस्मोस, कॉस्मोस एक उन्होंने लिखा था, 5 वॉल्यूम में था, जिसमें ऑर्डर्ड वर्ड की बात की थी। इसी तरह से रिटर्न ने अरकुंडे लिखा, द वर्ड, और डिस्क्रिप्शन अबाउट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग यूनिट में उन्होंने अरकुंडे लिखा। टोपोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, फॉर्मल डिस्क्रिप्शन, मटेरियल फैक्टर्स, ये सारी चीजें उसमें आई। और रिस्थोफेन का भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी एनालिसिस ऑफ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंटर रिलेशनशिप की बात की, मैप मेकिंग साइंस की बात की, यूजिंग मैप इन ज्योग्राफी की बात की। राड्जल का भी वर्क अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, लेवेंसरम, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी स्पेसिफिक रीजन की बात उन्होंने की। पेंक का भी अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्लोप, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, और अल्फ्रेड वेगनर में कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी, और श्लूटर का वर्क देखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप पर आप जाएंगे। फ्रेंच स्कॉलर का भी क्या कहना, जो अभी आप स्पेसिफिक रीजन की बात कह रहे थे, जेनरे डिवाई हमारे पास पहले ऑलरेडी से है, और लाइफ स्टाइल और वेज ऑफ लाइफ के बारे में फ्रेंच स्कॉलर वाइडर लीला ब्लास्ट ने पेज, PAYS, पेज एक शब्द का यूज किया था, और ही यूज्ड अप्रोच ऑफ डिस्क्राइबिंग रीजनल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन पेज। प्रादेशिक जो असमानता थी वो पेज के आधार पे, छोटे छोटे माइक्रो लेवल यूनिट्स के आधार पे जो डिफरेंशिएशन नजर आता था, उसके डिस्क्रिप्शन की बात उन्होंने की थी, और पॉसिबिलिज्म का जो कंसेप्ट दिया था। रिकलस का अगर आप वर्क देखेंगे तो यूनिवर्सल ज्योग्राफी जो 19 वॉल्यूम में उन्होंने लिखा था, ही गेव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू मैन एंड हिज कल्चर देन फिजिकल नेचर। ही हैज गिवन एम्फेसिस टू मैन एंड हिज कल्चर एज कंपेयर टू फिजिकल नेचर। और डिमॉर्टनी को भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी जो ट्रेड, ज्योग्राफी, फिजिक, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, फिजिकल ज्योग्राफी में इनका काम था। और एंड्रे सिकफेड का जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे, निर्वाचन भूगोल, यानी 1913 के आसपास इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफर थे जिन्होंने इलेक्टोरल ज्योग्राफी की बात उन्होंने की थी। और अमेरिकन ज्योग्राफर का क्या कहना, अगर WM डेविस की बात करें तो 1904 में ही फाउंडेड एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स, और ओंटोग्राफी का जो कंसेप्ट दिया उन्होंने, ओंटोग्राफी इज द एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कितनी बड़ी बात कही है 2 लाइन में, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद द चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण में कोई बदलाव हो रहा है तो वो जो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है उसको ओंटोग्राफी उन्होंने कहा। द रिवर्स एंड वैलीज इन पेंसिल्वानिया, उनका काम जो पब्लिश हुआ था 1889 में। रिचर्ड हार्शोन का जो भूगोल का जो दिल है, या तो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे ने जो लिखा है, या रिचर्ड हार्शोन ने जो लिखा है नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में। और हेनरी गोएड ने जो सेटअप किया था म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और गिलबर्ट, आप GK गिलबर्ट का काम देखिए, ग्रेड
ग्रेडेड प्रोफाइल और इक्विलिब्रियम स्लोप, ईसी सैंपल, जिनको मैं बहुत तेजी ले जा रहा हूं, लेकिन इनका काम द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट कभी भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, द ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन। और इसके अलावा सबसे बड़ा नाम मैं ले रहा हूं एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में। जब पढ़ेंगे इस किताब को, और द पल्स ऑफ एशिया, यानी एशिया की नाड़ी स्पंदन, द पल्स ऑफ एशिया, द क्लाइमेट फैक्टर, पल्स ऑफ एशिया 1907 में पब्लिश हुई, क्लाइमेट फैक्टर 1914 में, और उसके अलावा द सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915 में, क्लाइमेट चेंजेस 1922 में, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1921 में, ह्यूमन हैबिटेट 1927 में, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन 1950 में। बैरोस का जो क्या ह्यूमन इकोलॉजी का जो कंसेप्ट है, उसमें सारी बातें ज्योग्राफी की नहीं आती हैं। या 1925 का कल्चरल जो कल्चरल मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, कार्ल ओसावर का जो आप पढ़ेंगे, तो क्या उसमें ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन नहीं है? तो दीज आर द सम एग्जांपल फ्रॉम अमेरिकन ज्योग्राफर्स। नाउ यू सी द वर्क ऑफ ब्रिटिश ज्योग्राफर। स्पेंसर का वर्क जो है सोशल स्टैटिस्टिक्स, और उसके अलावा द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ये सारी बातें जो हम आज के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, अगर ज्योग्राफी में जाएंगे गुजरे हुए जमाने में, तो बहुत सारी चीजें इनकी किताबों में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस हैं। और अप्लाइड क्या है, कैसे हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, उसकी बात हम बात करेंगे। लेकिन पैट्रिक गेडिस का वर्क अगर आप देखेंगे, प्लेस वर्क फोक और मैकेंडर हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, हेबर्टसन का काम देखेंगे, द मेजर नेचुरल रीजन एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी 1905 का, एटलस ऑफ मेट्रोलॉजी, एक एटलस बना था मेट्रोलॉजी का 1899 में, और हेबर्टसन ने तैयार किया था। जी टेलर का जो काम है नियो डिटर्मिनिज्म में, सर डडली स्टैम का जो काम है द वर्ल्ड अ जनरल ज्योग्राफी। जब आप 1919 के ये किताब डाउनलोड करेंगे, द वर्ल्ड अ जनरल ज्योग्राफी, तो सारे ज्योग्राफी के डायमेंशन नजर आएंगे। प्रोफेसर मोहम्मद शफी साहब पीएचडी करने गए, उनके अंडर में द लैंड ऑफ ब्रिटेन, द रिपोर्ट ऑफ द लैंड यूटिलाइजेशन सर्वे ऑफ ब्रिटेन, तहलका मचा दिया था इस काम ने, क्योंकि पूरे दुनिया में लैंड यूज लैंड कवर का डेटा ही नहीं था, भारत में भी नहीं था। हम नहीं जानते थे कि नेट सोन एरिया कितना है, ग्रास सोन एरिया कितना है, बैरन लैंड कितना है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कितना है। अनदर इंपॉर्टेंट वर्क द लैंड फॉर टुमारो, द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड 1952, इंडिया पाकिस्तान सिलोन एंड बर्मा 1957, अप्लाइड ज्योग्राफी 1960, द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिसयूज 1948। और इसी काम के बाद प्रोफेसर मोहम्मद शफी साहब भारत में आए और उन्होंने लैंड यूटिलाइजेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एक शोध पत्र लिखा, और वो ज्योग्राफर में छपा, और उन्होंने पीएचडी टॉपिक पे किया, लैंड यूटिलाइजेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। और आपने देखा होगा कि नेट सोन एरिया, ग्रास सोन एरिया, वायरल लैंड और लैंड यूज के बारे में भी जानकारी नहीं थी, और ये भी नहीं जानकारी थी कि कहाँ पर कितना गेहूं होता है, कहाँ के कितने मिनरल्स होते हैं। तो क्या OHK स्पेट साहब का जो काम है, द चेंजिंग फेस ऑफ एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी, डेविड हार्वे का जो काम है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, द लिमिट टू कैपिटल, द अर्बनाइजेशन ऑफ कैपिटल, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, न्यू इंट्रोडक्शन जो 2008 में पब्लिश हुई है। इन सारे काम को भी आप नहीं निकला कर सकते। लेकिन व्हाट इज द फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ ज्योग्राफी? मिस्टिज्म। सबसे पहले 2000 साल जाएंगे तो हमको जानकारी कोई नहीं थी ज्योग्राफी की, नॉलेज तो था, नॉलेज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कल्पनाओं के आधार पर हम कोई बात कहते थे, सुनी सुनाई कथाओं के बारे में कोई बात कहते थे, और जो भी ज्ञान था वो इनविजिबल था। यानी प्रारंभिक ज्ञान जो भी होता है वो इनविजिबल होता है, डिसऑर्गेनाइज होता है। बाद में टेलियोलॉजिकल अप्रोच आया, जब हम जानने लगे कि नेचर क्रिएटेड एवरीथिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज हैविंग ए स्पेसिफिक पर्पस, यानी हर चीज की तो उत्पत्ति है, उसका एक उद्देश्य है। फिर बाद में आया थियोलॉजी आई, यानी कोई भी धार्मिक ग्रंथों के हट के अगर कोई बात कह देते थे तो फांसी चढ़ जाती थी, और उस समय में ये माना जाता था गॉड इज सुप्रीम अथॉरिटी। और बीच में एक टाइम और आया था, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, उसमें जो चर्चमैन थे, जो साम्राज्य विस्तारक थे, और जो मानचित्रकार थे यानी कार्टोग्राफर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान ज्योग्राफी में माना जाता है। फिर पॉजिटिविज्म आया, आगस्ट कॉम्टे का फ्रेंच फिलोसफर थे, जिन्होंने कहा था नॉलेज जो है, नॉलेज शुड बी टेस्टेड, नॉलेज शुड नॉट बी बायस्ड, और
उन्होंने कहा था कि कोई भी विज्ञान तब तक नहीं है जब तक कि उसको कोई भी ज्ञान तब तक नहीं है जब तक कि उसको विज्ञान की कसौटी में न परखा जाए। और उन्होंने इंस्पेक्शन की बात कही थी और कहा था कि नॉलेज शुड बी इंस्पेक्टेड, नॉलेज शुड बी एग्जामिन, यानी नॉलेज की बात कही थी और कहा था कि इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए और क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, तब उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। और जो परीक्षण की बात कही थी उन्होंने, और मेटाफिजिक्स और चेंज इन द फॉर्म्स की बात आई, फिर डार्विनिज्म आया और उसके बाद फंक्शनलिज्म में जो फॉर्म एंड फंक्शन की बात आई, फेनोमेनोलॉजी जो एडमंड हुसल का अप्रोच आया। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर आप ये देखे रहेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्योग्राफी के पास बहुत कुछ है और आज भी वो सारी चीजें हैं जो 2000 साल पहले थी और उसी को हम लोग जो है, जैसे यहाँ पर देखिए रियलिज्म, पॉजिटिविज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो रियलिज्म वाज डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव फिलोसॉफिकल व्यू इन ज्योग्राफी in an aim to combine both subjective and objective views of geography, while positivism seeks the answer of how does a pattern occur, but realism is interested in why such pattern occur. This was the difference of positivism and realism. So pragmatism was developed an alternative philosophical viewpoint to positivism, and pragmatism believes in using scientific techniques for finding solution to human problem. तो ऐसा नहीं है, क्या ये जो काम है, चाहे मैकार्टी हो, बीजीएल बेरी हो, एल.डब्ल्यू. गैरिसन हो, ग्रेगरी पब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड द ज्योग्राफर इन 1963, आर.बी. चोरले, पीटर हगेट, जेपी चैपमैन जो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी की बात करते थे, इयान बर्टन की बात करिए आप, द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन थ्योरेटिकल ज्योग्राफी 1963 में पब्लिश हुआ था, बड़ा मशहूर हुआ था, कैनेडियन ज्योग्राफर जो जर्नल है उसमें छपा था। बर्ट आर्नल्फी के जनरल सिस्टम थ्योरी, जीपी चैपमैन, और ये जितना भी काम है, मॉडल इन ज्योग्राफी, चॉर्ले एंड बेनेट क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी, और पीटर हगेट टाइम स्पेस ज्योग्राफी, ये क्या काम जो ग्वेल का काम है जो टोरंटो कनाडा के थे, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग इन ज्योग्राफी, और ऑल द ह्यूमन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कॉग्निशन। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ऑल द ह्यूमन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कॉग्निशन, यानी मनुष्य के मस्तिष्क को उन्होंने जोर दिया है कि कोई भी मनुष्य की जो क्रिया है वो उसके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। ऑल द ह्यूमन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कॉग्निशन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सेप्शनलिज्म। और एफ.के. शेफर का अगर आप याद करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एसे है, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी a methodological examination which was published in 1953, और बिहेवियरल ज्योग्राफी जो कंट्रीब्यूशन है विलियम किर्क का। इसी तरह से रिच सोपेन की बात करें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। प्रिस्टन जेम्स की ऑल पॉसिबल वर्ड, कभी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा, और उन्होंने लिखा था कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एंड विद द एसोसिएशन ऑफ थिंग्स दैट गिव्स कैरेक्टर टू पर्टिकुलर प्लेस। तो स्मिथ ने ज्योग्राफी के बारे में कहा था, ज्योग्राफी ऑफर्स अ ब्रॉड सिनेप्टिक व्यू ऑफ स्पेशियल रिलेशनशिप इन ह्यूमन अफेयर्स एंड ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एट द स्पेस विद इन विच द ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स। ये सब काम है। 5 तरह के डिस्क्रिप्शन ज्योग्राफी में 2000 सालों की हिस्ट्री में नजर आएगी। जब आप पढ़ेंगे डेविड हार्वे की एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, तो कॉग्निटिव डिस्क्रिप्शन, मॉर्फोमेट्रिक डिस्क्रिप्शन, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, टेम्पोरल एनालिसिस और सिस्टम एनालिसिस की बात होगी। और उसके बाद पैराडाइम इन ज्योग्राफी, जो शिफ्ट ऑफ नॉलेज, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट वर्क है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और जब स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन रिवाइज्ड पढ़ेंगे 1970 का, तो टी.एस. कोहेन का वर्क और डेविड हार्वे का वर्क जो है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। जब भी कभी आपको मौका मिलेगा तो जो पैराडाइम शिफ्ट है, जिसको कहा गया है कि पैराडाइम इज द इंटायर कॉन्स्टलेशन ऑफ बिलीफ, values, techniques, and so shared by members of given community. I'm not going to explain the paradigm, metaphysical paradigm, sociological paradigm, and constructed paradigm. So these are the changing paradigms of geography, and you have to give importance of every aspect, whether the use of model in geography, iconic model, analog model, symbolic model, and contribution of Chorley, Peter Haggard, Alan Pratt, Morrill, and you see
scale model, map model. Still we are using analog model, mathematical model, gravity model, potential model, regression model, deterministic model and historical model, locational model. और 50 से 60 के बीच में ज्योग्राफी क्या थी, बिहेवियरल और वेलफेयर ज्योग्राफी कब आया, 70 से 80 के बीच में ज्योग्राफी की मैट्रिक्स कैसे डेवलप हुई, और अमेरिका में क्या बात सोची जाने लगी कि देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइदर क्लोजर ऑफ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट अक्रॉस यूएसए, closure of geography department of Michigan University in 1981 to 1982 and 32 universities, merging of all the geography department with larger units in Australia and UK prompt Association of American Geographers to recommend a guideline for survival package for geography. ये सोचा जाने लगा कि ज्योग्राफी में ऐसी क्या बात रखी जाए जो ज्योग्राफी बनी रहे और वो एक अप्लाइड एस्पेक्ट के रूप में उसको लोग माने और उसके इंपॉर्टेंस रहे. तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस यूएसए established a committee for rediscovering geography new relevance to new century. They identified 5 objectives for survival of subject as a applied discipline. Skill oriented teaching, learning की बात कही गई. Identify critical issues and constraints for the discipline of geography. Clarify priority for teaching and research. Link development in geography as a science which national need for geography education, and communicate with the international scientific community about the future direction of the discipline. बहुत सारी बातें हुई और आज भी देखिए रिसर्च पोटेंशियल ज्योग्राफी में है. हम अपने ट्रेडिशनल चीजों को छोड़कर अप्लाइड एस्पेक्ट में चले गए हैं. बहुत सारा काम विश्वजीत चौधरी जी भी कर रहे हैं. वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में चले गए हैं, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट में चले गए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में हम काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी में चले गए हैं, एग्रीकल्चर एंड सॉइल्स में चले गए हैं, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में चले गए हैं, ओशनिक मॉडलिंग भी हो रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के इम्पैक्ट पर भी हो रही है, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट सारी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं. लेकिन जो रोल है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रो morphogenic human vulnerabilities, role of technology in identifying resource potential areas, role of technology in identifying the need of population and infrastructural development planning, role of technology in urban and regional planning studies, and role of technology in mapping and monitoring of natural resource monitoring. So these are the dimension. कोई भी पोटेंशियल आप ले लीजिए और आपको जो है रिवर हेल्थ हो, कोस्टल ज्योमोर्फोलॉजी हो, टेक्टोनिक ज्योमोर्फोलॉजी हो, माउंटेन ज्योमोर्फोलॉजी हो, जियो टूरिज्म हो, सारे एस्पेक्ट में ज्योग्राफर काम कर रहे हैं. चाहे हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग हो, वाटर शेड कैरेक्टराइजेशन हो, फ्लड मैपिंग हो, सॉइल इरोजन एंड सॉइल मॉइस्चर मैपिंग एंड मॉडलिंग हो, ड्राउट मॉनिटरिंग हो, इसमें ज्योग्राफर काम कर रहे हैं जो पहले नहीं थे लेकिन अब हैं. अब देखिए अर्बन यूटिलिटीज, प्रॉपर्टी टैक्सेशन, अर्बन हाइड्रोलॉजी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बन माइक्रो क्लाइमेट, ये सारी चीजें काम हो रही हैं. और क्योंकि बहुत सारा काम है मेरे पास इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको स्लाइड दिखा दे रहा हूं. पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है और उत्तर आधुनिकवाद, जिसमें ये बताया जाता है जीन फ्रेंकवाइस लियोटार्ड ही फेवर द आइडिया ऑफ प्लूरलिटी, बहुलता, आइडिया ऑफ डिफरेंस, आइडिया ऑफ फ्री फ्लो ऑफ लाइफ एनर्जीज ड्यूरिंग मॉडर्निज्म. तो ये हर व्यक्ति का विचार इंपॉर्टेंट है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में बताया जाता है. बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, माइकल फूको का काम और ये माइकल डियर का काम, cultural landscape and place making, economic landscaping of post-modernism, the construction of individual and boundaries of itself. डेविड हार्वे का खुद ही अपना काम है, जस्टिस, नेचर एंड ज्योग्राफी ऑफ डिफरेंस की बात इन्होंने की है. और उसके बाद लोकस ऑफ इमेजिनेशन, लोकस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल पावर, लोकस ऑफ सोशल रिलेशन एंड लोकस ऑफ मटेरियल प्रैक्टिसेस. तो चाहे ये जितने भी थर्ड स्पेस, फर्स्ट स्पेस, सेकेंड स्पेस, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट जो है, एडवर्ड सोजा का जो वर्क है, और मैन लिव्स इन हिस्टोरिकल सीक्वेंस, और ये सारे जो काम हैं इसको मैं आप दिखा दे रहा हूँ. कभी आप एक्सप्लोर करिएगा, ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि भारत में नवाचारों की इतिहास बड़ा नया है और उस हिसाब से हमारे पास बहुत सारे आधार हैं काम करने के. पूरी दुनिया में बॉरलाग के काम को आप क्या भुला देंगे, या MS स्वामीनाथन को भुला देंगे, या किसको भुला देंगे. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी. आई एम सॉरी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी भी एक मीटिंग है और बार बार वहां से कॉल आ रहा है, तो इस वजह से मैं वहां जा नहीं पा रहा था. तो मुझे तेज प्रेजेंटेशन करना पड़ा, लेकिन मेरी स्लाइडों से आपको अंदाजा हो गया होगा
कि ज्योग्राफी में बहुत कुछ ऑलरेडी हमारे जो ज्योग्राफर हैं वो दे के जा चुके हैं, केवल और केवल रिविजिट करना है और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है। आई एम सॉरी, बहुत तेज हमने प्रेजेंटेशन किया है, लेकिन मुझे लगता है रामेश्वर जी की बहुत सारी जानकारी आपको जो है मिली होगी, और उसके बाद जो है हमको 45 किलोमीटर ड्राइव करना है, 5 बजे तक पहुंचना है। तो आई एम सॉरी विश्वजीत, और इसको कंटिन्यू रखिए, मैं रास्ते में सुनता रहूंगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं वहां पहुंच के आपको रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू। बहुत 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 बधाई सर। माने आपने बहुत 4 घंटा का प्रोग्राम को आप इतने समय कम में दे दिए। पांडे जी, तो हमारा जो टाइम का मैनेजमेंट था, अगर हम ये नहीं करते तो कवर ही नहीं हो पाता, तो मुझे सही बहुत है, तेज सही है। चलना पड़ा ज्योति जी, तो आई एम सॉरी, बहुत तेज Thank हमने you. किया। लेकिन मेरी स्लाइडों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट को किन किन चीजों को एक्सप्लोर करना है, अपने पास्ट में भी जाना है और नई चीजों को भी एकोमोडेट करना है, और पुराने चीजों के आधार से। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू। Okay, so proceeding further, as I am the student of this university, I am honored to invite our last guest, Dr. Madanand Suryavanshi. He is the assistant professor and head of Department of Geography of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. He has done his PhD in agricultural geography from Bamu University in 2009. He has obtained PG diploma in remote sensing and GIS in social erosion and agricultural land use from IIRS Dehradun. He has published 14 research papers in peer-reviewed journals. He has presented 22 papers in conferences and seminars. He has his 9 articles published in local newspapers. He is a recipient of Shiksha Gaurav Puraskar Award by the Department of Education from Bombay University. I would like to invite you, sir, to speak few words. Over to you, sir. Thank you so much, Jyoti. Very good evening to all of you. Firstly, thanks a lot, Dr. Biswajit Chaudhary sir. He has given this opportunity to me. Today here present for the monthly lecture series, very renowned personalities. अब क्या कहूँ मैं, हिमालय और सह्याद्री का यहाँ पे विश्वजीत ने हमें टकराव लगाया है। बहुत सारे बोले तो मैं इतना ज्योग्राफी कम समय में बहुत पढ़ चुका। यहाँ पे प्रोफेसर चौधरी सर ने जो इनवाइट किए हुए प्रोफेसर्स, उसमें से प्रोफेसर पांडे सर, ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी एंड नाउ ही इज वर्किंग एज अ डीन. As well as very effectively now present Professor Siddiqui. A.R. Siddiqui sir is the father of running in geographer, and very thoroughly present here his presentation. And within 30 minutes, he has completed, I think, 150 thinkers here, and his work and his the contribution in geography. Actually, I congratulate our team of SAIARD and Professor Chaudhary. He is very good conducting these programs here. These programs too much effective on the new students, research students, and the all new introduced geographers, especially who has the concert with the concentrated in the geospatial technology and the geographical knowledge also. Basically, I am here, I don't have any PPT, but I will discuss, just let's discussion about the our today's the very huge subject, changing definitions of geography from the traditional to modern approach. It is the very huge subject, and they are not limit from the ancient human to till today. Geography is the day by day increase, and so many changes in geographical study and geographical phenomena also. Very first we see the geography is the concern with the place. From we know geographical study from time, geography is concerned with the very first is connect to the place.
We understanding the nature and causes of aerial differences on the global surface has been a geographer task since people first noticed the differences between the places. In a geography, from the ancient period, there the 3-4 components is very important. There is the very first is the observation, after then thinking, then after practicalize, and nowadays there is the very important role in a geographical research and study is the technology. In a geographical phenomena, very important to the identify the place and identify the differentiation of the places on the global surface. After then, through the geography, we seek understand these are differences in pattern. Every pattern, there are different human activities and different human tribes, different human culture. So, human distribution, interrelationship between the human and society, and the physical environment also very differential. There are peoples use the earth in the time and space very systematically, as well as how the differences are the related to people, culture, and economy. We are the very closely connected to geography because of we are totally depend on economically on the earth on the geographical phenomena. These are related themes, for example, express major concerns of our time, reflect the conception of the spatial decisions. In a geographer's pursuit of the understanding the questions everywhere and very basic things in every geographers, the how to understand the geography, there are 3 points is very important. One is the where, why, and how are the very centralized theme of the study the geography. The first of theme introduced the issue of the locations and the spatial choice. The latter to significant that modern geography is not a content merely described, but the seek the explain beyond the questions. Geographers also ask the fourth what if as a means of seeking alternative and the giving subject an applied dimension that the assistant decision makers in a planning and development of the variety of geographical scales. Geography is the continually extensive and dynamic subject. The idea of place is not a examinable objective, but the ultimate goal is the who pursuit gives the directions of geographical study. As the geographical concepts, it's the refer to the aerial context of the event. And objective and action is also very important. In other words, the pattern resulting from the human occupancy of the global surface over the time. The aerial context of set space which the through the measurable has be itself a meaning. Space become a place where the human invest it with the meaning most commonly by the giving his name and all spatial scales rather than the inherit the differences, but both involve the space has been the invested with the meaning. And after that, two important implications flow the understanding of the place. Very first is the geography is the strongly influenced by the norms of the social sciences. Nowadays geography is the bridge of science and social sciences, but geography very effectively run in the social sciences because of especially in India
so many issues in related to social sciences, and they effectively work out the geographers, because every social query connected to geographical phenomena or geographical complex also. The complexity changing the nature of human society is a permanent the type of precise accepted in the physical sciences. Instead, the social sciences offer the variety of the perspectives and the methods of the study, which to examine the consequence of the human behavior on the global surface. It is the studying the idea of the place from the spatial perspectives. Geographers inevitably encounter the problems of the changes through the time. For them, the landscape is the documents, historians to are the concerns with the change thoroughly, and the time as the documents of the human behavior. Nowadays, human behavior is very important issue in our society, especially in metropolitan cities. The human behaviors is the create the so many problems, and we are not control these problems because the human behavior change very dynamically and very negative style they have grow. After that, uh, like a geographer, historian are also concerned with the place. Indeed, the common concerns with the place bring the work of geographers and historian close up together. Second is the physical geographers are who is the studied in physical geography no less than the human geographer. He is the contributor to and the understanding of the places. For the concept of the site, the physical characteristics of the places, internal understanding aerial differences on the global surface, nevertheless, and geographers focus on pattern of the interaction to be the found and at the surface, and not the primary on the natural process that act and the from the above or the below. The recognize that the interaction between the human and environmental is always the mutual, and that the growth technical and the increase the human capacity of modify the environment and the correlate to the human activities and human growth and development also. Geography is, when we see in Professor Siddiqui sir's lecture, there the so many thinkers contribution sir was described, and there from the Eratosthenes to till today's geographers, so many persons here contribute very highly his work in considerable in geography. Because of that, growth is technology is greatly added in geographers in their the traditional tasks. It has given them the increasingly refined technologies for the gathering and interpretation data, whether in the field by means of the GPS or the aerial and the satellite imaginary. That is the spatial relationship are at the heart of the geography. Using software to analyze spatial relationship among the objective of being a map, GIS in particular has greatly assisted geographers in the depicting in the character of place. Not only can they now process larger quantity of the data more than quickly and with the greater influence, but also they can the manipulate variability and thus the project alternative that they give a geographer in application of dimensions. There the finally the work can be displayed using the advanced technologies of their computer generated mapping. The views of geographer presented here is that the core sharply focused on the concept of the place
one in which both physical and the human elements plays one important part in geography. The subject has been applied dimensions that affect our daily life. It can therefore be powerful medium for the development of skills, contributing on the citizenship and cultural awareness. Actually, it is the uh, from the tradition to till today work of done also in geography. But nowadays, the geospatial technology is commonly known as a geomatics, are the remote sensing, GIS, and GPS also. The technology is used for the visualization, measurement, and analysis feature of phenomena that occur on Earth. Geospatial technology used the various honor organization, for example, civil, business, government, and military, and geographical research. In geographical research, basically in the watershed studies, flood studies, cyclone monitoring, utility studies, scarcity of the water, urban planning, and urban and infrastructural development, disaster relief management. They're the very effectively use of this geospatial technology. This technology, so many advantage. They have help in effective management in natural resources also. This technology help in many applications like soil, geomorphology, hydrology, and land use, agriculture, land records, urbanization, infra, as well as watershed management is the very effectively use these methods, especially in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat. The watershed management is an integrated technology within the natural boundaries of the drainage, of technical development of land, water, plant resources, and meet all phenomena connect to the geospatial technology. And this technology is very important thing is the accuracy is the very important. So because of this technology, very useful to us. And now here I especially say here Professor Chaudhary sir very effectively run his all courses with the geospatial technology and the also geographical knowledge. So I am stop here. uh, Again, I thanks Professor Chaudhary sir who has invited me here, and I discussed with you. Thanks a lot, all of you. Thank you so much, sir, for your stimulating speech. If any of the Yeah. participant has a query, they may clear those. Okay, I think there are none. So let's proceed to sum up this webinar. Last but not the least, I would like to call Ms. Bullu Bashak, the faculty of SAIARD, for vote of thanks. Over to you, ma'am. आवाज नहीं आ रही है। वोट ऑफ थैंक्स को करा दीजिए, आवाज नहीं आ रही। Bulu ma'am, are you here? Okay, maybe some network glitches. So I would like to take this opportunity to give the vote of thanks to all our honorable speakers for this monthly webinar series, which we have started today, and also it will continue in coming months also,
with some new agenda, with some new topics, and with some new professors on the fraternities in the field of geography. But I would like to give my sincere thanks to the Honorable Professor Dr. B.W. Pandey from Delhi School of Economics, Delhi University. I would like to share my sincere gratitude to Professor A.R. Siddiqui from Allahabad University, and also one of the eminent Professor Madan Suryavanshi sir from Aurangabad and Bamu University. And all the participants, all the delegates, those who have joined from the different corners of India and abroad, and also my team members for conducting this event very smoothly. And especially I would like to give my gratitude to Rameshwar sir for his eagerless efforts to part of this event, and hopefully in coming days we will also get back to your lecture also. We can hear your lecture also, and I will request if you kindly share your mail ID here in the chat box, as that we can also note it and further we can communicate with you also. And in coming days, you can also, I will request to all the participants, you can also keep in touch with us through our website, through our Facebook page, as that you may get all details and intimations about our further activities and programs. So with this, once again, I'm conclude my speech here, and hope you will get a great day ahead. And tomorrow is the Netaji Subhash Chandra Bose Janma Jayanti, and also the Republic Day will going to celebrate. So in this regard, hopefully you will celebrate this event very sincerely, as well as with taking proper precautions in case of COVID situation. So thank you once again. Thank you very much. Namaskar.